आप सबको नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं डॉक्टर ग्रेवाल, एडवाइजर एट दी अंतारा केयर होम्स, आज आपके साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय पे आपके साथ चर्चा करनी। विषय ये है कि हम अक्सर जब भी एक डॉक्टर कोई टॉक देने आता है तो उम्मीद की जाती है कि बीमारी के बारे में बात होगी, लेकिन एल्डर्स ने जैसे ही 65 इयर्स के ऊपर लाइफ क्रॉस करते हैं, 75% लोगों को कोई ना कोई बीमारी होती है, लेकिन काफी उनमें से लोगों ने अपनी बीमारियों पे अच्छा काबू पाया होता है। डायबिटीज हो, ब्लड प्रेशर हो, आप अक्सर सुनते हैं कि मेरी डायबिटीज और ब्लड प्रेशर तो मेरे को बहुत अच्छा कंट्रोल है। उसके बावजूद उनको पूछो कि क्या हाल है, बस ठीक ही चल रहा है। शुगर की रिपोर्ट तो बहुत अच्छी आई थी, ब्लड प्रेशर मेरा हमेशा कंट्रोल रहता है, लेकिन बस कुछ ठीक नहीं है। थोड़ा सा और प्रोब करिए, भाई क्या ठीक नहीं है, बस तबीयत खुश नहीं रहती। आज हम एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में बात कर रहे हैं जो कि बीमारी नहीं है, लेकिन एल्डर्स की बीमारियों के साथ बहुत कॉमनली पाई जाती है। We are talking about mental health problems of the elders. And let me introduce myself. I'm Dr. Grewal. We are here in Antara, the care home where I have an OPD at the A558 Critical Class 2. I am associated with a lot of elder care work for the last 7-8 years. And it's my privilege and pleasure to share with you my views about mental health problems of the elderly. आज हम कवर करेंगे what is mental health, what are the risks to mental health problems of older persons, how does mental health present to an individual, मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे mental health problem है। बुखार है तो थर्मोमीटर लगा लेते हैं, शुगर है तो शुगर मशीन से नाप लेते हैं, लेकिन मेंटल हेल्थ का क्या मापदंड है, किस तरह पता लगता है? हाउ डू यू प्रिवेंट मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड हाउ डू यू मैनेज मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स? तो सबसे पहले तो जब हम मेंटल हेल्थ कहते हैं तो इसका मतलब मेंटल हेल्थ के अलावा कुछ और हेल्थ भी है। सो पहले तो आप समझिए कि स्वास्थ्य, हेल्थ को डिफाइन कैसे किया जाता है। हेल्थ एक किसी मापदंड से, अगर मेरा शुगर ठीक है मैं कहूं मैं हेल्दी हूं, दैट इज इनकरेक्ट वे ऑफ लुकिंग एट व्हाट इज हेल्थ। हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। इन तीनों का मिश्रण का जब संतुलन हो, दैट इज कॉल्ड हेल्थ। केवल ये कहना कि मुझे कोई बीमारी नहीं है, मेरा हाथ पैर ठीक चलते हैं, दैट इज नॉट हेल्थ। अगर किसी के हाथ पैर बहुत बढ़िया चलते हैं और कोई डायबिटीज भी नहीं है और ब्लड प्रेशर नहीं है, लेकिन सारा दिन अपने घर वालों को और पड़ोसियों की गाली देता रहता है वो इंसान, तो इट्स नॉट ए हेल्दी पर्सन। सो मेंटल, फिजिकल एंड सोशल वेलबींग, ये इसलिए जरूरी है कि जब हम किसी को एग्जामिन करते हैं या असेसमेंट करते हैं तो ये तीनों पैरामीटर्स की चेकअप ही तुलना होती है। इस हेल्थ के अंदर हमने मेंटल हेल्थ को एक हिस्सा बताया था। सो व्हाट मेंटल हेल्थ इंक्लूड्स, इट इज आवर इमोशनल, साइकोलॉजिकल। सो मेंटल हेल्थ इंक्लूड्स आवर इमोशनल, psychological, social well-being,
not just intellectual excellence. So अगर कोई बहुत अच्छे राइटर है या साइंटिस्ट है या बहुत अच्छी नौकरी पे है, it does not mean कि वो mentally बीमार हो सकते हैं. Anybody can be affected by a mental health illness. और mental health क्यों जरूरी है बात करनी? क्योंकि ये it कंट्रोल करता है कि हम कैसे सोचते हैं, हम क्या महसूस करते हैं, हम कैसे बिहेव करते हैं. हमें जब कोई लाइफ में मुश्किल आती है, हम उसको कैसे हैंडल करते हैं, हम आपस में रिश्ते कैसे रखते हैं, ये हम कौन सा फैसला लेते हैं अपने स्वास्थ्य को लेके, जिसको हम हेल्दी चॉइसेस कहते हैं, ये सारा मेंटल हेल्थ के बीच में आता है. और ये हम आज इसलिए ले रहे हैं क्योंकि 10th of October is observed as World Mental Health Day. और ये इसलिए ऑब्जर्व किया जाता है to raise awareness on mental health issues around the world and to mobilize efforts to support of mental health. That is why today is observed as the Mental Health Day. Why is it important to talk about mental health? क्योंकि mental health हमारे total health का एक बहुत important हिस्सा है. That is why it is important to talk about health. And number two, it can affect anyone, regardless of your age, gender, geography, income, social status, race, ethnicity, anything. So it does not, mental health does not say मैं इस particular area में ज्यादा जाऊंगा या इस मेल या फीमेल्स में से मैं ज्यादा पाया जाऊंगा. No, it can affect anybody. And therefore, normalizing the conversation, इसका मतलब इसके बारे में चर्चा करनी इसलिए जरूरी है कि जब किसी को मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम होती है, अगर उसने पहले कभी कोई चर्चा ही नहीं की तो उसको सही समय पर सपोर्ट नहीं मिलेगा. So that is the biggest challenge. When people don't get adequate support, they mental health neglect होती है और complications पैदा होते हैं. Does mental health get worse with age? The answer is yes. And that is why we are talking about mental health in the elderly population. Mental health in the elderly population के कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं. अब रिस्क हम किसको कहते हैं? रिस्क कैन बी बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, फैमिली, कम्युनिटी और कल्चर लेवल. इनकी खासियत है, इनकी देयर आर कैरेक्टरिस्टिक्स अबाउट दीज दैट प्रीसीड, मतलब पहले होते हैं. कुछ बायोलॉजिकल चेंजेस शरीर में पहले हो जाती हैं जो कि हाई रिस्क बन जाता है मेंटल हेल्थ की बीमारी के लिए. I think I'll make myself clear again. So some characteristics exist in a man's or a woman's life which make him prone towards getting mental health diseases. There may be multiple risk factors for at any point of life. We all have challenges in our life, right from 20 साल से challenges शुरू हो जाते हैं. But why are we talking about elder mental health? क्योंकि एल्डर्स में एडिशनली कुछ स्ट्रेसर्स और ऐड होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, एल्डर की कैपेसिटी ऑफ वर्किंग कम हो जाती है. देयर इज डिक्रीज इन फंक्शनल एबिलिटी, जो कि ऑलरेडी आने वाले प्रॉब्लम्स में और एग्रीवेट करती है. सो ओल्डर पीपल आर पर्टिकुलरली वल्नरेबल टू फैक्टर्स दैट लीड टू डिप्रेशन. सामाजिक इश्यूज क्या होती है? एल्डर पीपल हैव bereavement, कोई ना कोई रिश्तेदारी में मर जाता है, स्पाउस की डेथ होती है. तो ये जब सर्कमस्टेंसेस आती हैं तो मेंटल हेल्थ के ऊपर और भी असर होता है. सो वी कैन कैटेगराइज द रिस्क इन दीज कैटेगरीज के बिहेवियरल, साइकोलॉजिकल. ये जो कैटेगरीज हैं ये सब में कॉमन है. दे आर कॉमन टू ऑल ऑफ अस. सो आई कैन हैव अ जेनेटिक, मेरे बाप दादा या किसी मेरे रिश्तेदार में अगर किसी को
मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम हुई थी, मुझे उतना चांस ज्यादा होगा कंपेयर टू समबडी. सो दीज आर द कैटेगरीज दैट मेक इट हाई रिस्क. नाउ सपोज आई एम एट हाई रिस्क, हाउ डज मेंटल हेल्थ अपीयर इन अ पर्सन? किसी को बुखार है तो सडनली वो कहेगा मुझे आज ठंड लग रही है, तो यू विल कम टू नो. बट मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स डोंट appear suddenly. There is a process by which they come. और वो प्रोसेस अगर आप अवेयर नहीं है तो आप उसको पकड़ नहीं पाएंगे समय में. और एल्डर्स में एक बहुत बड़ा मिथ है कि कई जो मेंटल हेल्थ के प्रॉब्लम्स हमें जब शुरुआत होते हैं, लोग उसको एजिंग का नाम देके एक्सेप्ट कर लेते हैं. एंड दैट पोजेस अगेन ए डिले इन ट्रीटमेंट. So many of the mental health issues that come to elders get neglected because many elders don't know कि ये लक्षण है मेरी बीमारी के, और उसको वो उम्र का तकाजा मान लेते हैं. And that is a big challenge. So the common things that happen to people, the common things, ये जो मैं साइन सिम्टम बता रहा हूं, ये जरूरी नहीं है कि हर एक में पाए जाएंगे, ऐसा नहीं है. किसी में कुछ मिलेगा, किसी में कुछ मिलेगा. सो दीज आर जस्ट ए लिस्ट ऑफ अबाउट 10 सर्कमस्टेंसेस ऑफ प्रेजेंटिंग जो कि पॉसिबल है इंडिकेट करने के लिए कि इस इंसान को मेंटल हेल्थ इशू है. वो कैसे? सपोज समबडी हैज आइसोलेशन, आजकल अकेले रहते हैं, ही प्रेफर्स टू बी अलोन. चेक करिए कि उनके बाकी सारे सर्कमस्टेंसेस ठीक है, तब सोशल आइसोलेशन इंपॉर्टेंट हो गई. एपिटाइट, खाना पीना, भूख कम लग गई. ऐसा नहीं है कि जिसको भी भूख लगेगी वो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है. नो, आप पहले जॉन्डिस के लिए चेक करेंगे, पहले निमोनिया के लिए चेक करेंगे, पहले सांस के लिए चेक करेंगे. जब ये तीनों नॉर्मल होंगे और फिर भी उसको एपिटाइट लॉस है, यू विल सस्पेक्ट दैट दिस पर्सन हैज ए मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम. सो मेंटल हेल्थ को टॉप डायग्नोसिस नहीं होता, इट इज बाय प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन. सो दीज आर ऑल द सिम्टम्स दैट कैन कम एंड प्रेजेंट इन ए पर्सन एट सम टाइम ऑफ द लाइफ, और ये सब इंडिकेट करते हैं कि मेंटल हेल्थ है. ऐसा नहीं है कि केवल इसी से ही मेंटल हेल्थ डायग्नोज होगा. इंडिकेशन मिलेगी और फिर हम और चेकअप करेंगे. नाउ अगर हम मेंटल हेल्थ किसी को प्रॉब्लम आता है और उसका हम सही समय पे सही तरीके से इलाज नहीं करते, तो व्हाट कैन गो रॉन्ग इन इंडिविजुअल्स लाइफ? दे आर थिंग्स लाइक अनहैप्पीनेस. दीज आर ऑल द लिस्ट्स ऑफ complications that can happen with if mental health issue is not handled at the appropriate time. मैं बार बार appropriate time, appropriate इलाज, और आप आसपास में अपने फ्रेंड सर्कल में या फैमिली सर्कल में देखेंगे कि कुछ ऐसे एल्डर्स हैं जिनका सडनली एल्प्रेक्स की गोली पहले एक खाते थे, अब 3 खाते हैं. Why? Because that mental health problem is causing major problems in them. आप कई लोग एल्डर्स को देखेंगे आजकल खाना पीना छोड़ दिया, उनको पूछो क्यों नहीं, मैं तो मरी जाऊं तो ठीक है. ये बुढ़ापे का स्टेटमेंट नहीं है, ये मेंटल हेल्थ का स्टेटमेंट है. सो दीज कैन कॉज मेजर कॉम्प्लिकेशंस. एंड एज यू एज, अगर कोई 45, 50 या 55 इयर्स के सज्जन और लेडी है, वो अपनी मेंटल हेल्थ को कंट्रोल करके चल रही है. जैसे ही वो 65, 70 पे पहुंचती है, बाय मेयरली बिकॉज ऑफ डिजेनरेशन ऑफ द ब्रेन सेल्स, वही दबी हुई मेंटल इलनेस बढ़ जाती है. सो बाय एजिंग यू कैन गेट एग्रेवेशन ऑफ ए डिजीज which was lying dormant in all your life. And very important, now I come to my closing slides. मेमोरी लॉस एंड कॉग्निटिव डिक्लाइन. भूलने की और पहचानने की, भूलने की और पहचानने की जो तकलीफ आती है एल्डर्स में, उसकी वजह से उनकी पर्सनैलिटी बदल जाती है. आप देखेंगे सो मेनी पीपल आजकल तो बड़ा इनको गुस्सा आता है. वो गुस्सा इसलिए आता है
कि उन्होंने कोई चीज देखी, ये उनके सामने आई, अब उनको याद नहीं आ रहा कि ये क्या है, मैंने देखा हुआ है। तो उस इरिटेशन से वो लोगों से परे होना शुरू हो जाती है। एंड एवरीबडी थिंक्स कि आजकल ये भगवान का नाम लेते हैं इसलिए अकेले रहते हैं, एंड एक्चुअली दैट इज मेमोरी लॉस। सो प्लीज रिमेंबर, इंडिकेशन मिले तो जांच करानी चाहिए। एंड 3 चीजें लाइफ में हर इंसान बहुत वैल्यू करता है, ऑटोनॉमी, कॉम्पिटेंस एंड रिलेटेडनेस। इनका कमी होना या अभाव होना, decreasing or absence of these in a person's life directly affect mental health problems. So now I've told you how it can present. It can happen to anybody. I'm sure आप सब जानना चाहेंगे, how do you prevent mental health? डायबिटीज की प्रिवेंशन है, हर तकलीफ की प्रिवेंशन है। How do you prevent mental health problems? Remember, there is no sure way. However, if a mental health, you take steps to control stress, increase your resilience, आपके अंदर लड़ने की शक्ति improve हो, and boost your low self-esteem. 3 things can prevent your mental health. तीनों से. And the way to do that is, please be careful. These are just 4 items. Pay attention to warning signs. जो मैंने आपको साइंस बताए, कोई कहे कि मुझे आजकल सैर करने में अच्छा नहीं लगता, इसको वार्निंग साइन मानिए, बुढ़ापे की निशानी मत मानिए। जो आपकी रूटीन बीमारियां चल रही हैं, डायबिटीज हुआ, कैंसर हुआ, आर्थराइटिस हुआ, उनका सही इलाज करिए। क्योंकि अगर पुरानी बीमारी का इलाज सही तरीके से ना हो तो lot of elders commit suicide. You must have seen. So looking after your present disease is a way to prevent mental health diseases. And in management, these are certain tips to you which are not complete, but there are these. इनको follow करने से mind जो है active रहता है. And these are established, proven ways. You can take up all of them or you can take up some of them, but they will definitely help you. ये established है कि by doing these they definitely help you. Mental health के साथ में mental health को handle करने का हिंदुस्तान में नहीं, सारे दुनिया में एक बहुत बड़ा स्टिग्मा है। किसी को आप कहिए कि आप जाके काउंसलिंग कराइए या अपनी असेसमेंट कराइए, वो महसूस करते हुए कि यस मुझे इसकी जरूरत है, कई दफा घर में आके घर वालों से बात नहीं करते, क्योंकि उनको शर्म आती है। उनको अपने घर वालों को ये बताने में डर लगता है और शर्म आती है कि मुझे मेंटल हेल्थ काउंसलर के पास भेजा जा रहा है, मैं कोई पागल हूं। सो देयर इज अ बिग स्टिग्मा। बहुत, जैसे टीबी है, टीबी का रोग लेके अरे बाप रे, किसी को बताना नहीं, किसी को बताना नहीं। मेंटल हेल्थ का स्टिग्मा बहुत बड़ा है। आप देखिए, दीपिका पादुकोण ने कल ही टेलीविजन पे आके सबको बोला है, एज एन आर्टिस्ट, एन इंटरनेशनल आर्टिस्ट, उसने आके सिर्फ एक ही बात कही कि अगर आप मेंटली बीमार हो, प्लीज शर्म मत खाइए। दैट इज द वे टू हैंडल इट। Therefore, I tell everybody, unless and until you do not let stigma create a wall around you, आपको अकेला मत होने दीजिए। Join a support group. And therefore, let me share with you, that is where Antara has started this big effort to reach out to people with mental health issues, ताकि हम एक support group बने, केवल इलाज नहीं लेकिन एक फैमिली बने, because we together have to speak against stigma and talk about mental health diseases. So in conclusion, my carry home message to all of you, anyone can get mental health problems. Elders are more prone to get it. Aging enhances existing mental health problems. Dementia and depression, remember ye 2 Ds. Dementia and depression are the commonest mental health problem with elders. लेकिन अच्छी बात यह है
कि दोनों के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट अवेलेबल है। आपको आज कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप स्क्रीनिंग कराइए तो प्रिडिक्शन हो सकता है कि आपको चांसेस है। That is the most important information I want to share with you, that you must get yourself screened if you have suspicion that you have a problem. And अगर आपको पता लग जाए कि आपको प्रॉब्लम है, please, please, please don't try to handle it yourself. अकेले नहीं कर पाएंगे. It is always with support of trained personnel and at specialized mental health care centers, like that is what the Antara is providing. Trained caregivers and who will train you how to look after yourself at home. Your questions are welcome. Thank you very much for your patient hearing. So if any one of you have any questions or doubts, please raise your hand and you can ask me. Hello, sir. Yes, please. I am Santosh. I just want to ask a question regarding when we want to take our mental or our issue or issue with what we have discussed with any therapist or speaking to any person, to his friend or somebody who can assist. We normally don't tend to let them know our own personal problems, right? So that is the stigma. Maybe that is the issue. That is the problem. It is stopping to share with others our problems and get the resolution. So how to? What's your question, please? So basically, if I have a mental issue, if I depressed with any issue, or any problem in my life, I will not be very much open to speak to others my own problem. They will come to know problem. Very good. Yes, you have raised the point which was highlighted by me. You see, in case anybody suspects कि मुझे depression है, first and foremost, today that you have shared it with all of us, आपने अपनी लड़ाई शुरू कर ली है, आज ही शुरू कर ली है ये बात शेयर करके. Sorry to interrupt. Yes. I don't know Hindi, sir. Could you please tell Sorry? me? Okay, you don't know Hindi? Yes. Okay. See, by sharing your problem today, you have started your treatment. Because as I said, it cannot be done alone. You have taken the first step that you have shared it with us. Now, we need to enter into a professional dialogue. I would suggest that in the chat box, we can give you, I can give you our email. You can write to us, and we are speaking today, we can have a Zoom interaction. You need not come with your camera open. You can still keep your camera closed. We have an introduction. You are absolutely right. Very small steps to start with. Only then we will be able to come to the larger picture. I must congratulate and thank you for having shared your view, because this is how it starts. People are hesitant. They say, Doc, I don't think anything wrong with me, but still let me have a small questionnaire with you. So please, I will write my email ID to you. You can. Okay, sir. I will send it to you directly, and then you can write to us. Sure, thank you. Okay, and is there any therapy suggested at home to overcome mental health issue like over-possessiveness and depression for old age? Well, there is a question by a gentleman. I will see. The question is overcome. Now, overcome should not be the purpose. Number one, questioner, sir, it is important to understand, to diagnose the problem. A disease is treated
a problem is solved. So the first thing is to find out कि बीमारी है कि मुश्किल है. बीमारी का इलाज होगा, मुश्किल का हल निकालेंगे. So you suggested that yes, Mr. Send, I'm just sending you the email. Can you just type out the email? Okay, I've sent the email, please. Now, what is important to the questioner is there any therapy suggested at home? See, there itself lies the problem. घर पे therapy, दवाई तो बिल्कुल नहीं. It has to be given by a qualified person. So the way to do it, first is diagnosis. Number two, plan for management. Plan for management. Management में one part is दवाई, second part is counseling, and third part is support. ये तीनों का plan बनेगा. And then we both will sit down and discuss how much can be executed. That is how you will be able to plan. The next question is, how do you manage if all symptoms are in younger one? You mean to say if all these symptoms are in the younger age? I'm sure if you remember my slide, mental health problems can come at any age. They have to be handled the same way. Elders में केवल एक प्रॉब्लम एल्डर्स में आता है, एंड दैट इज दैट एल्डर्स को अपनी फिजिकल बीमारी के इलाज के साथ में मेंटल हेल्थ आ जाता है. सो बोथ कंबाइन, सो द बर्डन इज मोर. अदरवाइज मैनेजमेंट ऑफ डिप्रेशन इज सेम एट एवरी एज. The dose and medication can change according to the circumstances. If someone is frequently getting loss of sleep, very important. You see, the loss of sleep, I would say sleep disorders. Sleep disturb हो जाती है, is a very common presentation of mental health issues. And sleep क्यों disturb हुई? There is a physical test called sleep study. We do the sleep study to find out कि physically तो सब ठीक है, ऑक्सीजन ठीक पहुंच रही है ब्रेन को. जब वो नॉर्मल होगी, then a comprehensive mental health examination is done. It is called comprehensive mental health examination. And with that examination, there are a set of questions, बहुत आसान है. With that set of questions, one can make an assessment of what is the problem. मैं एक और थोड़ी सी क्लैरिफाई कर दूं. बेसिकली मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स दो जगह से पैदा होती है, या हमारी सोच के साथ या हमारे भाव के साथ. So either with thoughts or with emotion. So you can be sad for no reason. You tell somebody, बहुत उदास हूं मैं, बहुत दिनों से, पता ही नहीं क्यों है. One is emotion and second is thoughts. I start feeling that I am the president of the country and I start giving orders to everybody. That is a thought distortion. So mental health दो जगह से आता है. Thoughts, emotion are two major areas. So दोनों में से कौन सा है, that has to be diagnosed according to the individual. You can't generalize. Somebody asked for my details. I'm giving my email ID once again, please. There were certain questions I had received. We had received when the information was sent. There are 4 or 5 very important questions and very good questions. One is, should I worry about my mental health when caring for my mother who has Alzheimer's? Please remember,
mental health problems runs in families. So अगर आपकी मदर को अल्जाइमर्स है, आप अपना मेंटल हेल्थ का असेसमेंट जरूर करवाइए. It's a very important question. I have literally realized that my father forgets things. Should I be considered? Yes, you should be considered. Please get worried as soon as possible, and you need to get two things done straight away. One, you must get his hearing test done. Hearing test is a very important. Hearing loss के साथ we lose memory. So remember, hearing loss for every elder is a precaution for proper mental health care. आप पूछेंगे hearing का क्या connection है? अगर आप सुनाई नहीं देते, हमारा brain stimulate नहीं होता. So please get a hearing loss test. And the number 2, there is a form called MMSE, Mini Mental Screening Examination. बहुत आसान है, किसी भी neurologist या आप हमारे पास आ जाइए. That screening form is done. So if you are normal hearing and MMSE is negative, then जो आप भूलना की बात कह रहे हैं, that is something else. So these are the 2 screening tests we do for elders, a hearing test and an MMSE examination. By that you can find medical insurance, periodic checkups include screening. Screening test for mental health. Yes, ma'am, very important. जितने भी आप मार्केट में रमा जी, yes, I'm just answering you. There are a lot of packages available in the market. Full health checkup, flana हो गया, 900 test. I'm making a statement here. You can quote me. All these packages are useless for elders. They are of no use. You have stopped talking about diabetes and hypertension. You start talking about those problems that affect quality of life. And mental health is one biggest issue that affects quality of life. When going for MRI scan, usually people have to fill out a form asking for family history as cancer. The form should include history of mental. Thank you so much. That is a wonderful statement at clause number 3, that you should ask for family history of mental health illness. Mental health illnesses are a neglected area in India. Highly neglected. And they are neglected because of the stigma. And therefore, we can all get together and say, I am mentally healthy, and we remove the stigma. Yes, it's very important. ICU should allow one close relative in dementia. Absolutely. Let me share with you, we are working with major hospitals. We have launched a campaign called Age Friendly India. And we are getting now elder-friendly clinics. We are getting support, asking hospitals to have elder-friendly ICUs. Many times you take an 80-year-old person out of the ICU and with no extra medication they start improving. And if you ask them 1 week later, क्या हुआ था? वो lights और वो सारी गाने बजाने, वो music, वो सब टू monitors की टू मैं तो पागल हो गया था. Yes, you are absolutely right. Then the question is how to deal with physically inactive seniors. Let me tell you again, there is a systematic comprehensive examination to find out activities of daily living, ADOL. So you must make your own assessment of what type of activities you are capable of doing today. Have an assessment after 6 months. How much have I changed? How much have I lost? There is a question, hello, we are PSA level compulsory after the age of 45. Well, yes, sir, PSA is an important examination. Why at 45? These days, we start doing PSA as a screening
for a person even at 35. Age is no criteria for any test. If one person comes to me and says my father had prostatic cancer or my uncle had prostatic cancer, I will do a screening at the age of 35. So, आपके हालात फैसला करते हैं कि आपके लिए कौन सा टेस्ट करा. There is a question about memory issues. I like to once again clarify to the questioner that assessment of memory loss, जब हम किसी को कहते हैं उनको याददाश्त की कमजोर हो गई है, memory has 3 parts. Memory has intelligence, it has cognition, पहचानना. आप फोन पे आपने फोन करना था किसी को, अरे यार तुम्हारा क्या नाम था, अरे नाम, and suddenly somebody just gives a hint of that person's name. उसका नाम सपोज सतीश था, तो आपको इतना ही बोलो, हाँ सतीश था, तो पूरा नाम नहीं लिया, सा कहने से ही सतीश याद आ गया, क्योंकि वो आपके पास स्टोर्ड था. तो वी हैव इन मेमोरी लॉस में 3 हिस्से माने जाते हैं. एक इंटेलिजेंस का, प्रॉब्लम सॉल्विंग. किचन में आपने दाल बनानी थी, सडनली कंफ्यूज हो जाते हैं, मैंने पहले क्या डालती थी, मैं पहले क्या ये. सो इंटेलिजेंस के जो सवाल जवाब होते हैं. सेकंड इज ये पहचानने का. एंड थर्ड इज सोशल इंटरेक्शन. आपके घर में कोई गेस्ट आते हैं, 10 मिनट के बाद आप देखेंगे कई एल्डर्स खड़े हो जाएंगे, अच्छा जी नमस्ते, या तो उनको भी कह देंगे जाने के लिए, क्या अच्छा ठीक है आप मिलने आए थे चले गए. तो ये मेमोरी लॉस है, सोशल इंटरेक्शन भूल जाते हैं. तो जो आपने क्वेश्चन किया मेमोरी लॉस, असेसमेंट करना होगा कि मेमोरी लॉस का कौन सा हिस्सा मेमोरी लॉस हो रहा है. इट इज नॉट जस्ट कि जी याददाश्त की कमजोरी होगी, नो. कॉग्निशन, इंटेलिजेंस और सोशल इंटरेक्शन. किसी को सोशल इंटरेक्शन की प्रॉब्लम होगी, किसी को पहचानने की प्रॉब्लम होगी. कई लोग कहते हैं जी मैं मार्केट गया, क्या खरीदना था मैं भूल गया, बाकी फोन नंबर सारे याद हैं. So it is different in different people. An assessment has to be done. So I think the rest of the questions, most of them we have answered in our slide presentation. I'm sure you must have gone through the slide presentation. So any other questions? Yes, Ramati, you had raised your hand. Is there anything you want to find out? You'll have to unmute yourself. Yeah. No, it's just that the points that I wrote basically come out of my own experience, which is that I looked after my father. He had dementia, and I mean so he had that for many years. So these points came from that, and I'm really surprised that I don't know why the government doesn't take up, make these things mandatory, like the medical checkups, for example, which are so important. Like I didn't know my grandmother apparently also had it, and I did not know it till my father got it. And then one day my mother was just mentioned it briefly. Because my father used to stand in front of a mirror and sometimes laugh at himself, thinking he could recognize that person in the mirror, but not really who that was. So he said, somebody familiar. So my mother once said to me, your dadi also used to do the same. So then I realized, oh my God, my dadi ji also had this. So that's what I said, yes, it is known that, yes. When they go for an MRI or something, you'll be given these forms, we write, okay, what is the family history of diabetes, cancer, this. If they write that also, then younger children, when they take their parents to these clinics, they get more aware of their own family history. So that's what I was thinking. I agree with you. Thank you so much for your inputs. And it is genetic, it runs in families. And let me tell you another thing. It is elderly females have more manifestations of Alzheimer's than males.
Yeah. The female gender I is should get more, myself tested. yes, that's what I was trying to come to, that you should get this. Yes. Thank you so much. Yes, I will come to visit you definitely. Thank you. Yes. Thank you. So thank you so much for your joining the program, and we invite you to visit E558 at Greater Class 2 to have any of your mental health issues discussed with us. It will be a pleasure, and strengthening each other's support system. So thank you very much, and namaskar.